Okay, Assalamu alaikum students. Let's get started with October November 2022 IGCSE Physics Paper 2 Variant 3. This is an MCQ paper of 45 minutes. Let's start with it. थोड़ा सा zoom in करते हैं and let's see this question. A wire is approximately 48 centimeters long, ठीक है, and has a diameter of 0.3 millimeter. Perfect. Which measuring instruments can be used to obtain more precise values of the dimension of the wire? बेटा लेंथ ऑफ द वायर आप किससे मेजर करोगे? हाँ जी, लेंथ ऑफ द वायर आपकी 48 सेंटीमीटर लॉन्ग है. हाउ विल यू मेजर दैट? यूजिंग अ हाफ मीटर रूल. हाउ विल यू मेजर द डायमीटर? डायमीटर या स्मॉल लेंथ हमेशा माइक्रोमीटर से मेजर की जाती है. द आंसर कम्स आउट टू बी सी. The velocity time graph for a car is shown. What is the distance traveled in the 35 seconds? Do you remember that area under velocity time graph is equals to your displacement or distance? Can you calculate that? Yes. I can divide this into two shapes. मैं इसको दो shapes में divide कर सकता हूँ बेटा. First of all, and you can do it in three as well. चलो मैं three में कर देता हूँ so that I have some weak students as well. चलो तो हम three शेप्स में इस ग्राफ को डिवाइड कर देते हैं. दिस विल बी योर फर्स्ट शेप, दिस विल बी योर सेकंड शेप, या कि आपका सेकंड शेप, या कि आपका फर्स्ट शेप. दिस इज योर थर्ड शेप. ओके, सो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग द एरियाज. फर्स्ट शेप आपका ट्रायंगल है. 1/2 इंटू द बेस दैट इज 10 इंटू द हाइट दैट इज 10. 1 ये आ गया, 5 ये आ गया. द एरिया ऑफ द फर्स्ट शेप कम्स आउट टू बी 50 मीटर. अब सेकंड का भी निकाल लो. बेस क्या है बेटा? 10 से 35 यू हैव 25 मीटर्स. हाइट क्या है? 10 मीटर्स. मल्टीप्लाई कर दो. 25 into 10, दिस कम्स आउट टू बी 250 मीटर्स. अब आ जाओ थर्ड पे. इन द थर्ड एज वेल योर हाइट इज 10, बेस इज 10. 1/2 इंटू 10 इंटू 10, दिस बिकम्स 1, दिस बिकम्स 5. या क्या 50 मीटर्स. सबको ऐड कर दो. योर आंसर कम्स आउट टू बी 350 मीटर्स. बी इज योर आंसर. Which property of a body results from the effect of a gravitational field on its mass? कौन सी प्रॉपर्टी जो है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड है द वेट ऑफ द बॉडी? डी इज योर आंसर. आगे बढ़ते. द डायग्राम शोज फोर पीसेज ऑफ लेबोरेटरी apparatus. ओके, विच पीस ऑफ apparatus आर यूज टू डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड? डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड कैसे डिटरमाइन करोगे? यूजिंग अ बैलेंस एंड अ मेजरिंग सिलेंडर. बी इज योर आंसर. आगे बढ़ते. A metal rod of length 80 centimeter is pivoted at point 2. अच्छा जी, ये आपका pivot है. Its center of mass is at its midpoint. अच्छा जी, center of mass is at its midpoint मतलब weight यहाँ पे लग रहा है. The distance from the pivot to the weight is 40 centimeter. Why? Because the weight is acting at its midpoint. Four pulley wheels are indicated by the letter P. अच्छा जी, ये letter P से आपके पास चार pulley wheels हैं. Okay. The rod is in equilibrium. What does this mean? Anti-clockwise movement will be equal to clockwise movement. What is the weight of the rod? अच्छा जी, weight of the rod निकालने किस तरह निकालेंगे? First of all, can you calculate the tension in these ropes? बेटा इन ropes में आप tension निकाल सकते हो. How? This tension will be equal to the weight acting downward. Weight किसके equal होता है? mg 0.1 into g that is 9.8. निकाल दो जरा weight किसके equal आता है बेटा? 9.8 into 0.1. This comes out to be 0.98 न्यूटन. यहाँ पे भी आपकी टेंशन क्या हो जाएगी? 0.98 न्यूटन. नाउ प्लीज फोकस केयरफुल. दिस टेंशन की फोर्स विल बी इन द एंटायर स्प्रिंग. और यहाँ पे आपकी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फोर्स लग रही होगी 0.98 न्यूटन. इस तरह से. नाउ आई वांट योर अनडिवाइडेड अटेंशन. बेटा क्या आप रियलाइज कर सकते हो ये 0.98 न्यूटन की फोर्स इज रोटेटिंग योर मेटल रॉड इन विच डायरेक्शन?
ये आपकी मेटल रॉड को किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ये वाली टेंशन की फोर्स इज ऑल्सो रोटेटिंग योर रॉड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैन यू कैलकुलेट द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट? यप, टेंशन 0.98 into the distance between the pivot and the force, that is 20 centimeter, that is 0.2। फिर यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज निकाल लो, 0.98 is your force multiplied by the distance between the pivot and the force, ये क्या हो जाएगा, 60 centimeter, that turns out to be 0.6 meters। तो if you want to calculate the total anti-clockwise moment, वो क्या हो जाएगा, 0.98 into 0.2 प्लस 0.98 इंटू 0.6, इसको निकाल लेते हैं। 0.98 इंटू 0.2 प्लस 0.98 इंटू 0.6, दिस कम्स आउट टू बी 0.784 Newton meter। This anti-clockwise movement will be equal to what? The clockwise movement that the weight generates। बेटा वेट कितना क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा, weight की force multiplied by the distance from the pivot, that is 0.4, this becomes 0.4 W। Now, since you are in equilibrium, anti-clockwise moment is equals to clockwise moment. Anti-clockwise क्या है, 0.784, clockwise क्या है, 0.4 W। Can you calculate weight? Yes, 0.784 divided by 0.4 is equals to your weight। निकाल लो weight की वैल्यू क्या आती है। This comes out to be 1.96 Newton। That is 2 Newton is your answer। आगे बढ़ते हैं। The diagram shows an object moving at constant speed in a circular path। In which direction shown? अच्छा, in the direction shown। A force acts on the object in the circular path। अच्छा जी, एक force act कर रही है in the circular path। In which labeled direction does the force act when the object is in the position shown? बेटा force कहाँ act करेगी, towards the center, D is your answer। अच्छा जी, a force acts on a body of mass m for a time of t। During this time the velocity changes from u to v। Which equation relates f m t u and v? तो हमने क्या पढ़ा है, force is equals to change in momentum over time। How can you write change in momentum? Mass into change in velocity। Change in velocity is final minus initial velocity divided by time। If I take time to the other side, ft is equals to mv minus u। Any options like that, C is your answer। अब यहाँ पे आ जाओ। An object falls towards the earth's surface। What happens to the gravitational potential energy? As you are falling towards the earth's surface, आपकी height decrease होगी, gravitational potential energy decreases। Kinetic energy will increase as the gravitational potential energy is decreasing। B is your answer। अब ये देख लो। A skier is pulled up a short straight slope at constant speed by a rope। अच्छा जी, constant speed से rope जो है आपको pull up कर रही है। The tension in the rope is 100 Newton। अच्छा जी, rope में जो tension है वो 100 Newton है। And there is a combined frictional and air resistance force of 20 Newton। Okay. The slope is 10-meter long and the skier rises 1.5 meter vertically। How much work is done by the rope pulling the skier up the slope? Work done का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फोर्स इनटू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। फोर्स क्या है बेटा, 100 न्यूटन। डिस्टेंस ट्रैवल्ड अप द स्लोप क्या है, कितना डिस्टेंस आप अप द स्लोप ट्रैवल कर रहे हो, 10 मीटर्स। वर्क डन कम्स आउट टू बी 1000 जूल। सी इज योर आंसर। बाकी सारी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, यू कैन इग्नोर दैट। इन सम सिचुएशन अ फोर्स डज वर्क, ओके, विथ सेट ऑफ कंडीशंस इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स। वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। जितना आपकी फोर्स इंक्रीज होगी वर्क डन इंक्रीज होगा, जितना आपका डिस्टेंस मूव्ड इंक्रीज होगा उतना आपका वर्क डन इंक्रीज होगा। सो बोथ द क्वांटिटीज मस्ट इंक्रीज। सी इज योर आंसर। अच्छा जी, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, लेट्स सी। A measuring cylinder has a cross sectional area of this and a volume of this, okay, this is the cross sectional area of the measuring cylinder, this is the volume of the measuring cylinder। The pressure of the liquid at the base of the measuring cylinder is this। This is the pressure of the liquid at the base of the measuring cylinder। You have to calculate the density of the liquid। How will you do that? Pressure is equals to rho g
H। प्रेशर क्या है बेटा? 8800। यू हैव डेंसिटी, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? 9.8। हाउ विल यू कैलकुलेट एच? एच कैसे कैलकुलेट करोगे? डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम क्या है? 224। एरिया क्या है बेटा? 4। कैन यू कैलकुलेट द हाइट? 224 डिवाइडेड बाय 4। क्या आप हाइट निकाल सकते हो बेटा? Yes, the height comes out to be what? 56 centimeter. If you convert it into meters, this will become 0.56. Density आ जाएगी आपके पास. Yes, 8800 divided by 9.8 into 0.56. Density की वैल्यू निकालो भाई, क्या आ रही है? 9.8 into 0.56. This comes out to be 1600 kg per meter cube. C is your answer. आगे बढ़ते हैं बेटा. The pressure of a fixed mass of gas in a cylinder is measured. The volume of the gas is slowly decreased. अच्छा जी, आपका गैस का वॉल्यूम क्या कर रहा है? स्लोली डिक्रीज कर रहा है. द टेम्परेचर ऑफ द गैस डज नॉट चेंज. टेम्परेचर क्या है भाई? कांस्टेंट है. डिस्क्राइब हाउ द प्रेशर ऑफ द गैस चेंजेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर किस तरह चेंज होगा? ऑल ऑफ अस रिमेंबर दैट अगर आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर विल इंक्रीज. Pressure will increase with time. A और D options cancel out कर दो. Also if you realize, आपका गैस का initially भी कुछ amount of pressure था. The gas initially has some amount of pressure as well, Pi. As time increases, the pressure increases. C is your answer. आगे बढ़ते हैं बेटा. Which statement about evaporation is correct? A body in contact with an evaporating liquid loses thermal energy. Yes, evaporation cooling effect produce करता है. That means loss of thermal energy. A is your answer. This is not in syllabus. This is also not in syllabus. Let's move ahead. Which piece of equipment is designed to produce a type of electromagnetic wave? बेटा कौन सा इक्विपमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिकल फायर. विच टाइप ऑफ वेव डज इट प्रोड्यूस? इंफ्रारेड radiation. And infrared radiation is a part of electromagnetic wave. A is your answer. आगे बढ़ते हैं. A passing boat causes a floating object on a lake to bob up and down 18 times in 12 seconds. अच्छा जी, आप 18 ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहे हो इन 12 seconds. व्हाट विल बी योर नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड? एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशन होंगी? 18 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 1.5 टाइम्स. The oscillations in 1 second is known as your frequency. बेटा कितनी oscillation आप perform करते हो 1 सेकेंड में is known as your frequency. अगर 18 oscillations perform कर रहे हो 12 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितनी oscillation perform करोगे? 1.5. Frequency comes out to be 1.5. The wavelength is 48 centimeter. That will become 0.48 meters. Can you calculate the velocity? V is equals to f lambda. Frequency क्या है? 1.5. Wavelength क्या है बेटा? 0.48. Calculate the answer. ये आ गया आपका आंसर 0.72 मीटर्स पर सेकेंड. अब इसको आपने सेंटीमीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 100. तो 0.72 multiplied by 100. This gives you 72 centimeters per second. B is your answer. Wave fronts are incident on a boundary. अच्छा जी, wave fronts incident हो रही है on a boundary. What is needed for refraction at the boundary? क्या चीज होनी चाहिए for refraction to occur? A shiny surface at the boundary? No. A small gap in the boundary? No. Different mediums होने चाहिए. That's correct. In which the frequency is different? No. Refraction में frequency same रहती है, speed change होती है. Different medium either side of the boundary in which the speed is different. Yeah, D is correct. आगे बढ़ते हैं. A person uses magnifying glass to look at a stamp. Which ray diagram shows a thin converging lens being used to do this? अच्छा जी, कौन सी रे डायग्राम जो है मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह वर्क कर रही है? ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू हैव अ मैग्नीफाइंग ग्लास, आपके पास डाइवर्जिंग
रेज होती हैं. Where are those diverging rays? In option A. A is your answer. अच्छा जी. The diagram shows an object in front of a plane mirror. At which labeled position is the image of the object formed? Image कहाँ पे बन रही है? The distance of the object from the mirror. Let's say अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो मिरर से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर होगा. 20 और आंसर. आगे बढ़ते हैं. The diagram shows the action of a thin converging lens on two rays of light. The rays are from the top of an object and inverted image eye is formed. अच्छा जी, inverted image eye form हो रही है. Which name is given to the distance RS? अच्छा, ये RS का नाम क्या होता है? Can you realize this is the optical center? This is your focal point. Distance between the optical center and the focal point is known as your focal length. Small f. C is your answer. The diagram shows the air molecules in part of a sound wave at a particular moment in time. Which statement is not correct? बेटा कौन सा statement correct नहीं है? Earlier there was a compression at point x. Yeah, that's correct. Later there was a refraction at point x. That's correct. This part of wave is traveling horizontally across the page. Yeah, this is correct. Since sound waves are longitudinal wave, this wave is traveling horizontally parallel to the direction of disturbance. This part of wave is traveling towards the top of the page. No, that's not correct. बेटा ये वेव टॉप ऑफ द पेज पे नहीं ट्रैवल कर सकती. Because if it starts to travel towards the top of the page, this will become a transverse wave. Sound waves are longitudinal wave. That's why D is your answer. The speed of light in vacuum is this. Which value is the closest to speed of light in air? Speed of light in air हो या vacuum हो same रहती है. 3 into 10 raised to the power of 8 meters per second रहती है. अच्छा जी, 100-meter race is started by firing a gun. The gun makes a bang and a puff of smoke at the same time. When does the finishing judge see the smoke and when does he hear the bang? बेटा स्मोक तो आपको फौरन से दिख जाएगा बिकॉज लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट. तो स्मोक तो आप इमीडिएटली डिटेक्ट कर लोगे. सी और डी कैंसिल आउट. However, you will hear the bang, you will hear the sound after 0.3 seconds. Please, your answer. आगे बढ़ते हैं. A student is to demagnetize a bar magnet. She tries 4 different ways. 4 different ways कौन कौन से? Hammering the magnet, heating the magnet, passing direct current through the magnet. नहीं, इससे demagnetize नहीं हो सकता. Placing the water in magnet. नहीं, इससे भी नहीं हो सकता. Only hammering the magnet and heating the magnet can demagnetize the magnet. B is your answer. आगे बढ़ते हैं. A student is investigating a resistance wire. She measures the current in 50 centimeter length of resistance wire. अच्छा जी, आप current measure कर रहे हो in 50 centimeter length of resistance wire. The student repeats the experiment using 100 centimeter length of the same resistance wire. तो आपने लेंथ इंक्रीज कर दी है. बेटा डू यू रिमेंबर अ सिंपल फॉर्मूला? रेजिस्टेंस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. अगर आप लेंथ इंक्रीज कर रहे हो दैट मींस द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आल्सो इंक्रीजेस. तो यहाँ पे ऑप्शन सी और ए कैंसिल आउट कर दो. Now, do you also remember that resistance is inversely proportional to current? अगर resistance बढ़ रही है बेटा तो current obviously for sure कम होगा. B is your answer. आगे बढ़ते हैं. A resistor is connected to a cell, so there is a current from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell. What causes the current in the resistor? Always remember protons कभी भी move नहीं करते. करंट किस वजह से अकर करता है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल. ए इज योर आंसर. यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख लो. कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. हाउएवर आपका जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है that flows from negative to positive. A is your answer. A plastic rod is rubbed with a dry woolen cloth. The rod becomes positively charged.
भाई रॉड अगर पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम द रॉड टू द क्लॉथ, द रॉड इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, फीस योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। Which combination of the current in a resistor and the time for which is present results in a 40 coulomb passing through the resistor? अच्छा जी, क्या हमने पढ़ा है? करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम, करंट इनटू टाइम इज इक्वल टू योर चार्ज। कौन सा कॉम्बिनेशन 240 कूलम्स का चार्ज हमें दे देगा? लेट्स एनालाइज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आपके पास करंट 2 है, टाइम 120 है, बताओ चार्ज क्या आ जाएगा? 240 कूलम्स इज योर आंसर, सिंपल। Each potential divider is placed in a power supply. Okay. Which potential divider makes the potential difference across component Y increase when the light intensity increases? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लाइट इंटेंसिटी की बात हो रही है बेटा तो ऑप्शन सी और डी कैंसिल आउट कर दो, बिकॉज ऑप्शन सी और डी में आपके पास थर्मिस्टर है और थर्मिस्टर लाइट इंटेंसिटी नहीं, लाइट इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ए और बी पे आ जाओ। अब ए और बी में से इफ यू एनालाइज ऑप्शन ए, इफ योर लाइट intensity increases, what will happen? The resistance of LDR will decrease, the voltage across LDR decreases, hence the voltage across Y increases। A is your answer। आगे बढ़ते हैं बेटा। what an interesting question। Two resistors R1 and R2 are connected in a series as shown, the current in the resistors is I not, ठीक है। Another resistor R3 is then connected in parallel with R2 as shown, perfect। How do the currents I1, I2 in the resistors R1, R2 compare to I0? चलो जी आराम से देखते हैं, सुकून से देखते हैं। First of all, let's assume the resistance of each resistor is R। मैं assume कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो भी resistor लगा हुआ है उसकी resistance जो है वो R है, ठीक है। Now, if you realize the total resistance of the first circuit is 2R, R प्लस R क्या हो जाएगी? 2R। However, अगर यहाँ पे आप टोटल रेजिस्टेंस निकालने जाओ तो देयर विल बी वन थिंग दैट यू हैव टू रिजॉल्व फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टर्स हैं, इनको रिजॉल्व कर लो। वन ओवर द रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। इफ यू रीअरेंज इट, 2/R, the resistance in parallel comes out to be R over 2. So you can draw the second circuit like this, R and then R over 2, ठीक है। तो आपकी टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? R प्लस R over 2, that is 1.5 R। Now take an eagle's eye view of this। Can you realize second circuit में your total resistance is 1.5 R, है ना? सेकेंड सर्किट में आपकी टोटल रेजिस्टेंस क्या है? 1.5 आर। फर्स्ट सर्किट में योर टोटल रेजिस्टेंस इज 2 आर। व्हाट विल हैपन टू द करंट? डू यू रिमेंबर? Resistance is inversely proportional to current। If your resistance of the second circuit is decreasing, the current in the second circuit will increase। That means this current I1 will be greater than I naught। Option A or B cancel out हो गए, ठीक है। Can you realize what I have done here? The resistance has decreased according to inverse proportionality। अगर resistance decrease होगी बेटा तो current will increase, I1 will become greater than I naught, simple। Okay, what about current I2? How does current I2 compare with I naught? Again, just focus on the word. How does current I2 compare with current I naught? थोड़ा सा फोकस करेंगे, होपफुली इंशाल्लाह दिस विल गेट क्लियर टू यू गाइस। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइस। नाउ टू सॉल्व फॉर द नेक्स्ट पार्ट व्हाट वी कैन डू इज, हम एक काम कर सकते हैं। हम कह देते हैं कि भाई हमारी ये वोल्टेज सप्लाई है V और ये वोल्टेज सप्लाई है V। कैन यू कैलकुलेट द करंट I नॉट नाउ?
V is equals to IR. V is equals to current I naught, total resistance 2R. V divided by 2R is equals to your current I naught. This is your current I naught. Okay. Now let's calculate current I1. Let's do that. Your voltage is V, current is I1, total resistance is 1.5 R. V over 1.5 R is equals to I1. If I remove the decimals, क्या हो जाएगा? 2V over 3R is equals to I1. Simple. अब बेटा ये I2 क्या है? If you look closely, your I1 gets equally divided. ये जो आपका I1 है वो दो हिस्सों में equally divide हो जाता है R and R. So I2 is basically what? Half of I1. I1 क्या था? 2V over 3R divided by 2. This will become what? हाँ जी, ये क्या हो जाएगा? 2V 3 into 2R. Cancel, cancel. This will become V over 3R. This is your I2. Can you realize your value of I2, that is V over 3R, is less compared to the value of I naught, that is V over 2R? क्या आप realize कर सकते हो this I naught is greater compared to I2? Yes, D is your answer. This entire paper had only one difficult question, that is this. The 31 का answer is D. Simple. If you don't understand it, do ask me again in the comments below as well. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मुझे कैसे पता चला कि I1 ग्रेटर है कंपेयर टू I0? बिकॉज आई कैलकुलेटेड द टोटल रेजिस्टेंस. द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड सर्किट इज 1.5 R और फर्स्ट सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है 2 R. As the resistance decreases, your current will increase. That's why I1 is greater than I0. उसके बाद हमने क्या किया? वी अज्यूम दैट द बैटरी का वोल्टेज इज वी हियर, द बैटरी का वोल्टेज इज वी हियर. यू कैलकुलेटेड इंडिविजुअल करंट्स आई नॉट एंड आई वन. देन आपने ये देखा कि आई वन दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है. आई वन इज गेटिंग डिवाइडेड इक्वली इंटू टू. सो आई टू इज इक्वल टू आई वन ओवर टू. योर आई टू कम्स आउट टू बी दिस. डी इज योर आंसर. लेट्स फर्दर मूव अहेड. अच्छा जी, इसको देखते हैं. नाउ आई थिंक वी विल हैव इजी क्वेश्चंस. द डायग्राम शोज अ circuit containing a cell, a lamp and 2 ammeters. The reading of ammeter 2 is 0.2 ampere. Okay, what will be the reading of ammeter 1? 0.2 ampere as well. And the circuit is in series. A is your answer. 33 page. Oh, 33 is not in a syllabus. Chalo, that's some easy work. Okay. 4 small compasses are placed around a solenoid. A current is now switched on in the solenoid. Which diagram shows the possible new directions of the compass needles? अच्छा जी, हमने compass needles की नई direction बतानी. Here the magnetic field is going into the solenoid. Let's say ये south है. यहाँ पे भी inside the solenoid जा रही है, ये भी south है. This cannot be possible. एक solenoid पे दो south poles या दो north poles नहीं हो सकते. There must be one north and one south. Okay, here the magnetic field is going in. This is south. Magnetic field is coming out. This is north. Let's draw the magnetic fields from north to south. Can you realize ये वाला कंपास रॉन्ग पोजिशन है. बी कैंसिल कर दिया. अब सी को देखते. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इन जा रही है. दिस इज साउथ, दिस इज कमिंग आउट, दिस इज नॉर्थ. या पहली लाइन तो सही बन रही है. फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ योर मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग करेक्टली. लेट्स ड्रॉ द सेकेंड फील्ड लाइन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. Can you realize the field line is opposing where the compass is pointing? बेटा field line की direction is opposite to where the compass is pointing. C cancel हो जाएगा. Let's try out this. This is north, this is south. Magnetic field goes from north to south. ये आ गई आपकी field line की direction. North to south ये आ गई आपकी field line की direction. The field lines are corresponding to the compass needle at all points. D is your answer. Which metal is used for the core of a transformer? Soft iron. C is your answer. आगे बढ़ते हैं. The diagram shows a conducting metal rod PQ in the magnetic field between the north pole and the south pole. The rod is connected to a resistor in the circuit. Perfect.
In which direction should rod PQ be moved to induce current in I? बेटा जब भी आप करंट इंड्यूस कर रहे होते हो वेन एवर यू आर इंड्यूसिंग करंट कौन सा लॉ लगता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल किस तरह लगाना है जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड आई एम ओपनिंग द कैमरा जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड अच्छा जी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रियलाइज मैग्नेटिक फील्ड नॉट टू साउथ पॉइंट कर रही है लाइक दिस योर करंट इज इनटू द पेज बेटा मैग्नेटिक फील्ड नॉट टू साउथ पॉइंट कर रही है करंट इनटू द पेज है आपका थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है वेयर इज योर डायरेक्शन ऑफ थंब पॉइंटिंग अपवर्ड फोर्स आपकी आ गई अपवर्ड इफ यू डोंट रिमेंबर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल प्लीज रिवाइज इट विथ मी जो फर्स्ट फिंगर है दैट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड second finger points in the direction of current that is inward the thumb points in the direction of force is your answer simple let me close the camera now okay a thin metal foil is placed in a vacuum alpha particles are fired at the foil and most go straight through a very small portion of alpha particles are deflected through large angles what does this provide evidence for भाई ये किस चीज़ का एविडेंस प्रोवाइड करिए अल्फा पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल नो नो there is a tiny nucleus in each atom. C is your answer. The table compares alpha radiation, beta radiation, and gamma radiation. Which row is correct? Alpha radiation is more ionizing than beta or gamma. Yeah, that's correct. Beta radiation is a proton. No, ये गलत हो गया. Alpha radiation is more ionizing than beta and gamma. Beta radiation is an electron. First two तो correct है. Gamma radiation is an electromagnetic radiation. C is your answer. आगे बढ़ते a high voltage power supply is connected to a metal grid and a wire as shown. When the radioactive source is placed close to the grid, sparks are produced in the position indicated. Which statement explain why the sparks are formed? भाई कौन सा statement बता रहा है कि why are the sparks are formed? Because alpha particles are strongly ionizing. They ionize the air यहाँ पे. बेटा alpha particles इस air को ionize कर देते हैं. That's why sparks are produced. D is your answer. आगे बढ़ते हैं. A student investigates four different radioactive isotopes. The student places a detector near each radioactive material. The background count rate is 36 counts per minute. The table shows the detector readings at the start and after 8 hours. Which isotope has a half-life of 4 hours? अच्छा जी कौन सा आइसोटोप ऐसा है जिसकी हाफ लाइफ 4 आवर्स की है लेट्स स्टार्ट डूइंग द वर्किंग ऑप्शन ए को देखते हैं योर इनिशियल रीडिंग इज 150 150 में से बैकग्राउंड रेडिएशन माइनस कर दो 36 का ये क्या आ गया 150 माइनस 36 माइनस क्या 114 आ गया आफ्टर वन हाफ लाइफ दिस विल बिकम 57 आफ्टर अनदर हाफ लाइफ दिस विल बिकम 28.5 28.5 में 36 प्लस करो क्या हो जाएगा 64.5 यहाँ पे 64.5 नहीं है लेट्स लीव इट ऑप्शन बी को चेक करते हैं ऑप्शन बी में यू हैव योर इनिशियल काउंट रेट एज 212 माइनस द बैकग्राउंड रेडिएशन दैट इज 36 या आ गया 176 176 को डिवाइड बाय 2 करो दिस कम्स आउट टू बी 88 88 को डिवाइड बाय 2 करो दैट्स 44 और 44 में इफ यू ऐड 36 आई थिंक दैट विल अगेन गिव अस द इनकरेक्ट आंसर दैट इज 80 ये भी इनकरेक्ट है ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट चलो लेट्स ट्राई आउट ऑप्शन सी हमने कोई ऐसा काउंट रेट ढूंढना है लेट्स ट्राई आउट ऑप्शन सी 260 में से 36 माइनस किया दिस कम्स आउट टू बी 224 224 डिवाइडेड बाय 2 112 112 डिवाइडेड बाय 2 56 प्लस 36 आई थिंक दिस इज करेक्ट 92 सी इज योर आंसर तो बेटा हमने क्या किया है एग्जामिनर बता रहा है कि बैकग्राउंड रेडिएशन 36 काउंट्स पर मिनट है
and you have a radioactive isotope with a half life of 4 hours, you have to identify before and after 8 hours. तो बेटा अगर आपकी हाफ लाइफ 4 आवर्स है और आपने आफ्टर 8 आवर्स देखना है तो इसका मतलब क्या है, दो हाफ लाइफ इलैप्स होनी चाहिए. So which option gives the correct answer with two half lives elapsing and background radiation minus plus करके C is your answer. Let me check the marking scheme. Yeah, C is the answer. If you have any questions here, you can ask in the comments below.